जय हिंद। Charged up? Yes, sir. Great. So today is World Environment Day, right? Yes, sir. Before starting, I just wanted to check how many people know normal temperature. What is the normal temperature? Body temperature? 37, right? Anyone else? 27. 32. 37 is right. Anyone else? 35 to 37. Chat GPT. So 37 is normal temperature and our body temperature is 98. 98 से जब ऊपर बढ़ता है तो fever. And currently our mother earth is having fever. अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है? More than 40? पूना, I am new to Pune few years, but पूना के लिए मैंने ऐसे सुना था. पूना से कितने लोग हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे? सो पूना में जब आप लोग पैदा हुए होंगे उस समय एसी नहीं लगता था, साल का 12 महीना. फैन वॉज ऑल्सो ए प्रिविलेज टू बी यूज्ड. सबके घर पे था बट नहीं लगता था, ज़रूरत नहीं रहती थी. टुडे सब लोग एसी चला रहे हैं, पूना में भी. एंड हाउ कैन वी कम आउट ऑफ इट? इट्स नाउ और नेवर. बिकॉज मदर अर्थ को फीवर है, और फीवर होने से क्या होता है? आपको अगर किसी को फीवर है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यस. We are having cold cough, headache, weakness. We are not able to do our work properly. Our mood is not nice. Mood swings. इन शॉर्ट कुछ करने का इच्छा नहीं होता, राइट? सो हम मदर अर्थ से हमको वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, पल्सेस आ रहे हैं, राइस आ रहा है. तो किस वे में आ रहा है? शी इज नॉट वेल एंड वी आर गेटिंग दैट फूड. तो उससे क्या हो रहा है? वी आर नॉट गेटिंग 100% न्यूट्रिशियस फूड. So now what can we do? Because as future leaders, you will be entering into corporates, starting your own startups. So it's our responsibility to do what? Plant a tree. Who said it? What's your name? Jain sir, my name is Aryan Pathak Chaturvedi. Aryan Pathak Chaturvedi. You sent me a request today morning, right? Yes sir. With a message. Yes sir. Great. Sit down. So ये सबको पता है जो उन्होंने आंसर दिया? Plant a tree. But he said, right? Responsibility लिया उन्होंने. We should take responsibility. Whatever we know, we should. So now to plant trees, before starting this, I will brief you about one of my tour which I recently completed. It was in Orissa. Orissa से कोई है क्या यहाँ पे? Do you know KBKK districts? Kannamal, Bolangir. So I was there. And today also I was surprised कि अभी भी इतना डेवलपमेंट के बाद वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है. एक विलेज में I had to walk around 3 kilometers, and in that village electricity was not there. मतलब
है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी. वाटर ऑल्सो थैंक्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 महीना पहले आया है. एंड वुड यू बिलीव देर आस्क हाउ मेनी ऑफ यू नो, कोई फार्मर फैमिली से है क्या यहाँ पे? ग्रेट. सो एक पेड़ लगाने में और उसको बड़ा करने में 3 साल कितना पैसा लगता है? एनी आइडिया? जय हिंद सर. जय हिंद. माई सेल्फ सजल पाटीदार सर. 5 से 7 हज़ार रुपये पर ईयर. 5 से 7 हज़ार रुपया पर ईयर नहीं. सो फॉर 3 years टू प्लांट ए ट्री और उसको बड़ा करने के लिए टेंटेटिवली अराउंड 3 to 4,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है. एंड आई ऑल्सो डिडंट न्यू कि अगर आप एक फ्रूट का पेड़ लगाते हो, लाइक मैंगो और जो भी दूसरे फ्रूट्स आते होंगे, लेमन, वंस they are ready to give the fruits, every year per tree का income is 50,000 rupees. अब वो डिस्ट्रिक्ट में जहां मैं गया था वहां पे 50,000 रुपया इज बियॉन्ड एनीथिंग. वो डिस्ट्रिक्ट में 15-20 साल पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल करते थे फॉर 100 रुपीज़. सो इफ वी प्लांट ए ट्री, उससे कितने बेनिफिट्स है आप देखो. द टेम्परेचर, टेंटेटिव टेम्परेचर एक रोड पे अगर साइड में पेड़ लगे हुए हैं तो उसका टेम्परेचर कितना कम रहता है? एनी आइडिया? कितने डिग्री से कम होता है वो? 3 to 5 to 7 degrees. And now the monsoon is round the corner. So we should try to plant a tree. अब वो प्लांट्स लगाने से क्या बेनिफिट मिलते हैं? अब हम तो लगा देंगे पेड़, या किसान अगर कोई लगाता है, ट्रीज टुडे क्लाइमेट सिक्योरिटी टुमारो. ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट, यू मस्ट बी सीइंग. उत्तराखंड से कितने लोग हैं? वहां पे हर साल क्या आ रहा है? लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स. क्यों आ रहा है? एक्सेसिव रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज. डिफॉरेस्टेशन. 70% of Uttarakhand is forests only. It's due to climate change. वहाँ से काफ़ी लोग coming to cities, not taking care of plants. So one tree tentatively absorbs 25 kg of carbon emissions in a year. और वो कार्बन लेके क्या देता है हमको? ऑक्सीजन. और क्या देता है? फ्रूट्स और शेड और वुड काट के. बैलेंस द टेम्परेचर. अभी एक राजस्थान से कितने लोग हैं? एनीवन फ्रॉम उदयपुर? उदयपुर. So near Udaipur there is a village called Piplantri.
So whenever a girl child is born, they plant 111 trees. I am not educated as you, MBA नहीं हूँ, तो बचपन में पढ़ा था मैंने राजस्थान मतलब क्या, सूखा, रेगिस्तान, पत्थर, एंड वहाँ पे उस समय में राजस्थान में गर्ल फिटिसाइड, भ्रूण हत्या भी करते थे. तो ए जेंटलमैन, ए सिंगल पर्सन, ही लॉस्ट हिज डॉटर इन सम एक्सीडेंट, एंड उस दिन उन्होंने एक वचन लिया, खुद को दिया वचन कि मैं अब यहाँ पे पेड़ लगाऊंगा, जब कोई बच्ची पैदा होगी पेड़ लगाऊंगा. सो टुडे the water which was 800 foot under the ground is overflowing. आप पेड़ लगाओगे तो वाटर हार्वेस्टिंग भी अच्छे से होता है. एंड ही हैज क्रिएटेड ए बायोडाइवर्सिटी जंगल देयर, ए सिंगल पर्सन. एंड आप तो कितने लोग हो, आपका फ्रेंड सर्कल, अभी आप लोग ज़्यादा फेसबुक पे रहते हो कि इंस्टा पे रहते हो? लिंक्डइन पे कितने कनेक्ट्स है? यू कैन इंस्पायर. पहले बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, अभी बोलते हैं नेकी कर चिल्ला के बोल. एक ट्री प्लांट करो, उसका फोटो निकालो, डालो, मे बी समवन गेट्स इंस्पायर्स एंड ही ऑल्सो डज द सेम थिंग. पॉसिबल? Our collective responsibility. फर्स्ट पॉइंट पढ़ेगा कोई? Jain sir, Jai I Hind. am Preena Patel. Trees today, climate security tomorrow. No. Our collective responsibility, first point. Sequesters atmospheric carbon and supports net zero goals. So what does this mean? Anyone? Yes. Jai Hind sir, Jai my Hind. name is Aritra. So it means the trees absorb carbon dioxide and reduce carbon footprint, carbon emissions. So we will get close to the net zero of carbon emission goals. So what is net zero? Modi ji has signed a Paris agreement that India will be a net zero country by 2070. And few corporates, Reliance, HDFC Bank, they have come up with more aggressive commitments that they will become net zero by 2040. Net zero means the emissions which you are making are equal to emission is positive and oxygen which comes is negative. पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो क्या होगा? बैलेंस. सो करेंटली देर इज वन कंट्री विच इज नेट जीरो. कैन एनीबडी नेम दैट कंट्री? भूटान, राइट. Who said it? Guess? ऐसे guess किया? No, sir. You know that? Yes, sir. Great. And the happiness index in Bhutan is also 100%. 100%. I don't know, sir, that. You don't know. हमारा इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत नीचे है. क्यों नीचे है? So second point. Restores degraded landscapes and improves soil health. So what does this mean? वो बता रहे हैं. Give the mic to him. Jain sir.
Jain sir, my name is Ash Tiwari, and the real example for this sentence is the landscape which occurred in Kedarnath. So and also the सो वॉट वी आर डूइंग, हमारा जो सॉइल है, जो खेती करते हैं हम लोग, उसमें केमिकल डाल डाल के सॉइल हेल्थ खराब कर रहे हैं. उसको सही करने के लिए आप केमिकल कम यूज़ करोगे, अच्छे पेड़ लगाओगे, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगा, वाटर हार्वेस्ट होगा. एनहेंसेस बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. बायोडाइवर्सिटी अभी मैंने बताया, पिपलांत्री. आप वहाँ जाओगे ना, ऐसा लगेगा मोर देन 200 ग्लोबल एम्बेसडर्स हैव विजिटेड दैट प्लेस. इतना अच्छा बना दिया है उन्होंने उस विलेज को, जंगल के जैसा दिखता है. इतने पशु पक्षी, नॉट नेटिव्स ऑफ दैट प्लेस बट दे आर देयर, बिकॉज उनको सब मिलता है वहाँ पे. improves air quality and water conservation. So during, दिल्ली से कोई है? पोस्ट दिवाली क्या होता है वहां पे? पूरा पोल्यूशन क्यों आता है? वो बाजू में हरियाणा, पंजाब पराली जलाते हैं. Now there are so many industries coming up there which are solving this problem. They are taking parali and from that they are baking briquettes. Creates long term environmental and social value. कोई एग्जाम्पल पिपलान ट्री छोड़ के? यस. Jai Hind sir, my name is Ritik Shivare. The one example that I remember about is the Chipko movement, which was started way earlier in order to not allow to cut the tree. So people gather around the tree and they hug the tree in order to show their value and respect toward the environment and the tree. Yes. Jai Hind sir, Jai my Hind. name is Yogesh Chaudhary, and sir, one of example is my father himself, as he works as village development officer. So he invested the MG Narega funds through the village unemployed laborers, and he planted a social forest in the village. And now the whole district have inspired from him, and he was also praised by the Minister of Finance, Minister of Forest and Climate Change of Maharashtra at that time. So now, yes. Jai Hind sir. Jai Hind. My name is Yogesh Kumar. Sir, one example I remember is initiative taken by our Prime Minister Modi ji. एक पेड़ माँ के नाम, as they are two conditions, like everyone is very emotional about their mothers. So by giving the name एक पेड़ माँ के नाम, so I think this is a way to create a social values, and also it helps to maintain our environment, and people will be motivated to plant more trees. Thank you, sir. So the final sentence on this slide is, the best time to plant a tree was 20 years ago, and the next best time is today. And all of you are going to get an opportunity to plant a tree during monsoon. Our institute supports this cause. So one more thing about carbon credits. So do you know what is carbon credit? So let's get to this regenerative agriculture. Regenerative agriculture तो पता है ना, खेती जो हम करते हैं. If you are doing regenerative agriculture through organic practices, using zero chemicals or fertilizer chemical in a very, very small quantity, so those are eligible for carbon credits. So a company is emitting and a farmer is producing.
oxygen. He is sequestering carbon. So he is eligible for carbon credits. Tentatively, per hectare, 1 hectare is 2.5 acres. So 1 hectare gets the farmer around 2 to 7 credits depending upon the crop. And those credits, if we list those projects on registries, they are eligible to get carbon credits, and these credits are purchased by the corporates, industries which are polluting. Every industry is polluting, right? So one is carbon neutrality. Let's take a use case of our institute. We have solar installed, we have latest lighting systems कि जहाँ पे आप ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाती है. Have you seen that? So we are reducing our emissions, and whichever cannot be reduced, we are offsetting it through purchasing carbon credits and becoming carbon neutral. So we are incentivizing the farming community, the people who really need it. अब एक पेड़ लगाएंगे तो 25 kg सीक्वेस्ट होता है कार्बन, एंड 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन 1000 kgs. सो 40 प्लांट्स पे एक क्रेडिट यू विल गेट फॉर 30 years. एक बार पेड़ लगा दिया, 3 साल सर्वाइव हो गया, उसके बाद 30 years तक फार्मर को मिलता रहेगा. एंड द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड $250 per credit. Today it ranges between 100 to 150 depending upon the SDG goals attached to it. You know the meaning of SDG? Sustainable Development Goals. Climate change presents one of the most significant economic and operational challenges of our time. Achieving net zero is no longer an aspiration, it is becoming a strategic necessity. So pehle the differentiator was, if you are selling your product, pricing, quality. Now in future the biggest differentiator will be neutrality, net zero, supply chain, from whom you are procuring it. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे कुछ मार्क होता है, ग्रीन एंड रेड, राइट? ऐसे ही आगे जाओगे तो हर प्रोडक्ट पे लिखा आएगा, दिस प्रोडक्ट हैज डन सो मेनी एमिशंस, दिस प्रोडक्ट इज कार्बन न्यूट्रल. There are so many brands which have carbon neutral products, fashion brands. There are few brands which plant trees. If you purchase products of their brand, their company, Mamaearth, right? ऐसे बहुत सारे हैं. And recently IPL खत्म हुआ, IPL में भी वो लोग कुछ हर डॉट बॉल पे, हाउ मेनी ट्रीज दे प्लांट? 90 trees, 19 per dot ball. So how to become a net zero company? The first thing is to measure. अब फॉर एग्जाम्पल तबीयत ठीक नहीं है हमारा, वॉट वी डू? आई वॉज टॉकिंग अबाउट फीवर.
first thing we do is take a tablet, become self doctor, क्रोसिन, डोलो, और 2-3 दिन में ठीक नहीं हुए तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास. एंड वी डोंट टेल लाइज टू 3 people, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसमें पहले हम जब पढ़ते थे इसमें 4 कैटेगरी था. सबसे पहले था टीचर, गुरु. अब उनको भी आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं हम. तो डॉक्टर क्या करता है जब हम जाते हैं? ही सेज ठीक है ये ब्लड टेस्ट करवाओ. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज मेजरिंग. सो वॉट एवर एमिशंस आर देयर, आवर इंस्टीट्यूट to become carbon neutral, whatever emissions they are doing, they measure it. So first thing is to measure. We measured, उसके बाद reduce. How to reduce? Solar, lighting. पहले आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं मुझे, फोकस लाइट्स देखे क्या किसी ने पहले जो लगते थे? सो नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू ऑल LED एंड दूसरे भी आते हैं बहुत सारे लाइट्स. सो उसमें पावर कंजम्पशन इज वेरी लेस. सो फर्स्ट इज टू मेजर, देन इज टू रिड्यूस. अभी ऑफसेट हो रहा है, आगे चल के ऑफसेट भी नहीं मानेंगे. यू विल हैव टू रिड्यूस. अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आए हैं पावर के लिए कि इफ somebody is installing a solar plant somewhere in Maharashtra, you can buy electricity from him, from that organization. So that is solar power. And whatever you are using here, it will be offsetted. तो आप कोल कंजम्पशन आपका 0 हो गया एंड आपका कंजम्पशन आ रहा है सोलार से. And last is to monitor and report. So the process of carbon credits is also the same thing. First we will measure, then we will report, then third party auditor verifies it. Once that is done, then the project get registered. Post that, there is a monitoring period of 6 months. We get the credits and ready to sell. So this process is very slow और change easily accept नहीं होता है. Initially the cost of solar installation way back 5-10 years was very costly. Now the price has come down, and due to this West Asia crisis, ये West Asia crisis में सब लोग क्या सुन रहे हैं? नहीं, वॉर है, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एनर्जी क्राइसिस. अब कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज़, कुछ भी देखो, एनर्जी का बात हो रहा है. Government is giving so many subsidies for biogas plants. Why? We want to be self-reliant. And 10 years down the line, ये जो आज ऑयल बात कर रहे हैं सब लोग, 10 years down the line, India will be the most self-reliant country on energy. आपको पता है ये इंडिया का सोलर पावर इंस्टॉलेशन का जो टारगेट है उसमें अराउंड ए मेजर पोर्शन कच्छ बॉर्डर पे
इंस्टॉल हो रहा है बाय अदानी, एंड वहाँ पे जो इंस्टॉल हो रहा है उसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन ए हायर साइड बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. एक तो हीट ऊपर से आ रहा है, एंड सेकेंड जो रेत से गर्मी जा रही है, इट्स जनरेटिंग मोर पावर. इंडिया इज गोइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट एनर्जी कंट्री वेरी सून, एंड ये जितना भी डॉलर्स जा रहा है बाहर बहुत कम हो जाएगा फॉर एनर्जी थिंग्स. यू नो व्हाट वी इंपोर्ट? ऑयल, गैस. टुडे the prices of food in restaurants has gone up tremendously because gas prices, LPG and everything. अच्छा, अब इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ भी काट रहे हैं. क्यों काट रहे हैं? यूज करने के लिए इंडस्ट्री में. सो any questions? Yes. Jain sir. Jain. Myself Aryan Patak Chaturvedi, and I come from Mumbai sir, and I live in a high-rise building, and I've also heard कि वहाँ पे भी if you plant a specific number of trees, you get some credit points or some leverage from the government. The builder gets. Yes. So, sir, in a metro city like Mumbai or any other city, how can we do more to bring more greenery or more nature into a cemented Concrete jungle. Yes, a concrete jungle. So in Mumbai also there are so many places where trees can be planted, and shift of energy to solar. In Jaipur, a housing society has planted trees on their rooftops. The temperature has come down by 6 to 7 degrees. 4,000 families have planted. वो फ्रूट्स भी मिल रहा है उनको, वेजिटेबल्स भी मिल रहा है. Yes, sir. Innovation. Yes, sir. I want someone from here. Yes. Sir, since India is moving readily towards cleaner energies, and major part is of solar energy. So in solar energy, slowly there will be major problem of e-waste. So how would we, sir, will be able to tackle that? New technologies are coming wherein these solar panels can be prevented from going into landfill. They will also create energy, waste to energy they will also be creating. Thank you. Yes. Jain sir, my name is Akshat. So my question to you is, sir, you said that we have to stop using chemicals because of the soil quality that is degrading right now. Sir, but how will we feed the crowd that is, we have so much population, and I don't think that organic farming we will able to produce such Biochar. quantity of. How many of you know about biochar? So during, you know, yes please. बैठ जाइए आप. Jain sir. जैन. My name is Vishwaraj Goyal, and biochar is the thing which is used by the fossil plants for after processing the biodegradable waste which we get from the trees and all. So pellets are used for the bioplants, and the restaurants for the bhatti to use it. Yeah, this biochar is being used by steel plants,
cement industries for as a replacement to oil to generate power. But biochar is also used by farmers. Your question. It's also used by farmers to enhance the soil health and to give higher yield of a crop. This is generated by a process called pyrolysis, and the biomass is used in that. And as Indian land is 90% of India's land is acidic, so we cannot use 100% of that. We have to mix 10% biochar and remaining 90% khad. Last few questions. Jain sir, my Jain. name is Arun Nagar and I am from farming background. Sir, my question is about this process of create credit, and there is any website for this credit system? What is the process of credit? Yes, sir. So I briefed you about the process. Sir, how we connect a credit system? So now the awareness is going on. We as a company do this. This is a very costly affair. So we invest in the entire process and give back 70% revenue to the farmers. Jai Hind sir, my name is Satvik Gandhi. As you said about the solar plant and bio the credit also, but my question is, what about your view on polyhouse? Like if someone wants to go, and it's the Pune weather and Mumbai is also connected near. So in the tier 1 cities are here, so growth is also here. So what your view about the polyhouse, that one? So my view is, where there is no option, we have to integrate that whatever is available. Yes, but in terms of profitability and sustainability, what's really, that's, if you have any idea what's going on in here? So here also there are lots of innovations are coming up, lots of new technologies are coming. And in business, if there is no profitability, you cannot survive. But so the entire focus is that only, how we can reduce the emissions by not disturbing our profit. Jain sir, my name is Arya Shrivastava. Sir, many countries have mandatory the carbon trading systems. Should India will make it mandatory, or it will be voluntary? India has also launched CCTS, Carbon Credit Trading System. So now in next 2-3 months we will be having a carbon credit exchange, and the credits, mandatory credits. For example, if a steel factory is generating 1000 tons of emissions and their baseline calculation was 1000 tons, and due to solar it has reduced to 800, they will get 200 credits. And for every industry there is going to be a mechanism wherein they will be permitted to emit X tons of emissions. Post that they will have to buy credits and offset it. Next 2-3 months it will be live. You can watch this energy thing which I was telling about India. You should also follow Sarthak Ahuja. He has in his video told about this energy crisis and the solution, what India is doing currently to come out of it, and how we will transform and become more and more self-reliant in the coming years.